अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर बुक रिव्यू एंड इस दफ़ा हम जिस बुक की बात जो हमने लास्ट बुक रिव्यू में बात की थी हम उसी पे बात करेंगे, दैट इज़ लुकिंग फॉर अलास्का बाय जॉन ग्रीन। अब जॉन ग्रीन का मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट राइटर्स। वो जिस तरह की बुक्स लिखता है, जो क्यूरियोसिटी और जो उसमें डेप्थ होती है, दैट इज़ कंसिस्टेंट इन ऑल ऑफ हिज राइटिंग्स। आज जो हम बुक की बात करेंगे वो दैट इज सिमिलर टू द लास्ट स्टोरी पेपर टाउन्स के साथ। एंड उसमें जो स्टोरी लाइन की जो मेन कैरेक्टर है उसकी पर्सनालिटी भी पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। इज द सेम इसमें जो है जॉन ग्रीन की जो राइटिंग है वो एक रीडर को से कैप्टिवेट करती है। जब आप उसकी किताबें पढ़ते हो आपको लगता है कि आप स्टोरी का एक हिस्सा हो। आपको जो है उसमें आप कैरेक्टर्स में रंग मिल जाता है आपके। आपको लगता है कि जो स्टोरी में जो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो आपके साथ भी किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में हो चुका है या आपने भी वो गुजारा हुआ है। एंड that actually motivates the reader to actually reach to the end of the story. That's why it makes John Green's writing so much famous and so much more uh, profitable for him, because many young adults हमारी तरह पढ़ते रहते हैं। आज की जो स्टोरी है इट्स बेस्ड अपॉन अ कैरेक्टर नेम माइल्स हाल्टर। ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ लोनर। जैसे लास्ट बुक में था पेपर टाउन्स में, तो उसमें क्विंटन था, तो उसके साथ उसकी पर्सनालिटी काफ़ी रिलेट करती है। एंड जॉन ग्रीन लाइक्स टू पुट curiosity in his mainstream line characters because he himself is a curious person। तो वो उसी ट्रेड को वो लेके जाता है अपने कैरेक्टर्स में वो अपनी ही एक इमेज दिखा रहा होता है। तो माइल्स हाल्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है ही बीइंग अ लोनर एंड नॉट हैविंग दैट मेनी फ्रेंड्स इन हिज होम टाउन। एंड उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस ही इज अलोन, तो जो उसके पेरेंट्स है देर काइंड ऑफ वरिड फॉर हिम कि हाउ विल ही सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज genuinely no one can be alone in this world and no one can succeed in this life without any other person's help। आपको हमेशा लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे किसी और की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो माइल्स ने अपनी लाइफ के दो हिस्से बनाए हुए हैं, एक पिछला और एक बाद का, जो कि जिसका सेंटर पॉइंट एक ऐसा टर्निंग इवेंट है जिसकी बेसिस पे वो अपनी लाइफ को डिफर करता है। उससे पहले उसकी लाइफ कैसे थी, उसके बाद उसकी लाइफ कैसे हुई, एंड उसने उसमें क्या क्या किया, किस तरह से था, अब वो कैसा हो गया, क्या चीज़ उसमें चेंज हुई, क्या चीज़ उसमें वही रही। तो वो उसमें घुमा रहता है कि मेरी लाइफ किस तरह से मैं उसको ठीक कर सकता हूँ या किस तरह से इसको मैं गुजार सकता हूँ। अब माइल्स ने अपने पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट की एक तरह से कि उसने एक कल्वर क्रीक बोर्डिंग स्कूल अटेंड करना है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ। और उसके उसके पेरेंट्स को ये बात इतनी अच्छी लगी नहीं बिकॉज ही डजंट हैव दैट मेनी फ्रेंड्स। तो उसको नहीं पता कि वो वहाँ पे सर्वाइव कैसे करेगा। लेकिन फिर भी माइल्स को पता था कि वो अपने बारे में श्योर था कि वो किस तरह से उसको लेके जाएगा, किस तरह से उसको हैंडल कर पाएगा। एंड एज इट इज जब वो कल्वर क्रीक जाता है तो ही मेक्स हिज फर्स्ट फ्रेंड दैट इज हिज रूममेट एंड दैट इज चिप्स। अब उसकी पर्सनालिटी इज एन आउटगोइंग पर्सनालिटी एंड दैट इज यूजुअली कॉमन इन व्हेन यू फाइंड न्यू प्लेसेस और व्हेन यू हैव न्यू फ्रेंड्स, दे हैव अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी देन योर ओन। So it is not that bad to have friends of different personalities. You can't really match with them, but you can actually relate with them. It's not about the personality or about the way they spend their life which makes them friends. It's about the way they are friends with you. तो माइल्स एंड चिप्स की दोस्ती इस तरह से हुई एंड सिंस दे वर बोथ रूममेट्स तो उनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी टाइम अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी मतलब उनकी डेवलप होगी बिकॉज दे आर ऑलवेज टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बट चिप्स डिड व्हेन माइल्स अटेंडेड कल्वर क्रीक, उसने उसका सोशल सर्कल उसको डिफाइन किया। सोशल सर्कल कैसे कि उसने जो रिच किड्स होते थे वहाँ के, उसको उन्होंने नाम दे दिया था वीकडे वॉरियर्स का। वाई? सो वीकडे वॉरियर्स बेसिकली कि ये कि पूरा हफ्ता इधर होते हैं एंड देन वीकेंड्स पे अपने घर चले जाते हैं टू देयर रिच होम्स एंड मैंशंस एंड दे जस्ट लिव देयर ओन लाइफ, दे हैव फन इन दैट। तो दैट्स व्हाई दे गॉट द नेम। एंड चिप्स का अपना भी एक निकनेम था, ही वाज कॉल्ड द कर्नल बिकॉज ही वाज द
kind of a good, you can say, an advisory to their group. उनको अच्छे advices भी देता था and used to help their friends a lot. अब चिप्स ने माइल्स की मुलाकात करवाई अलास्का से इन द स्टार्ट ऑफ देयर फ्रेंडशिप. अलास्का एक बुक लविंग पर्सन है एंड शी loves to seek a new ending. She likes those final words of famous people that she reads about. अब उसको एक लाइन बहुत पसंद है which she lives about, कि it is called the labyrinth. मतलब वो labyrinth से वो कैसे निकलेगी, सही है. And the labyrinth of suffering. The labyrinth of suffering is basically a gateway to life, एक a hint to life. Okay, life is a maze. You have twists and turns and different problems, twists that you have to manage through it, and you need to get through those. So she calls that the labyrinth of suffering, and she wants an escape from that. She finds an escape plan for that, and she dedicates most of her life for that. इसी तरह से माइल्स जो है, माइल्स को एक पोएम बहुत पसंद थी एंड उसकी एक लाइन थी सीकिंग द ग्रेट परहैप्स एंड that shows that he wants to change his life, that he wants to see a new type of world where he can prosper or succeed in it. So he just takes that poem, that line of that poem into his brain, okay, that is how I'm going to live my life from now on. अब इनकी दोस्ती स्टार्ट होती है कि जो वीकडे वॉरियर्स हैं वो इनके ऊपर एक एक प्रैंक पुल करते हैं, और प्रैंक नहीं, यू कैन से एन अटैक पुल करते हैं. चिप्स एंड माइल्स के रूम में रात को आते हैं एंड देन दे बीट देम अप एंड उनको अच्छा खासा जो है टॉर्चर करते हैं एंड सो. दैट इज बिकॉज सपोजिटली उनको लगता है कि चिप्स ने उनके एक फ्रेंड ग्रुप में से किसी को रैट आउट किया था and which got those two people expelled from that. तो उस वजह से they had plans for seeking revenge from the weekday warriors के हमारे साथ गलत हुआ तो we are going to not spare them. Alaska was the main part in this plan because she was the smart one in all of them. She knew how to handle those, and she was actually the one who ratted those two people out and which got them expelled. But all of them actually proved that when you're with your friends, you don't rat them out. Even for one's sake, when they were caught when they were breaking the rules in their college dorm, तब भी अलास्का एंड चिप्स ने अपने दोस्तों के लिए वाउच किया था कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं है. एंड दैट इज हाउ अलास्का एक्चुअली टोल्ड माइल्स के जब फ्रेंड्स मसले में होते हैं तो यू डोंट रैट देम आउट, आप उनकी हेल्प करते हैं, यू एक्चुअली स्टैंड फॉर देम. एंड दैट इज हाउ फ्रेंडशिप शुड बी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन और व्हाट यू आर इन, how your relation with your friends is, you should never leave them behind, because that is when you want to see who your real friends are. I would personally think that when you're in a bad time or when you're in need of help, that is actually when you'll know who your real friends are. Because other than that, when it's a good thing, everyone is there to help you, everyone is there to see you shine. But when you're at your worst stages, no one will be there to help you up. अब इस स्टोरी लाइन में हम अगर और डीपर जाते हैं तो फिर हमें ये भी पता चलता है कि अचानक से अलास्का की डेथ हो जाती है. नो वन नोज व्हाई, नो वन नोज हाउ, ऑल्दो इट इज सपोजिटली सेड कि उसने सुसाइड कर ली. शी हैड अ कार क्रैश बिकॉज शी वाज ड्रंक एंड शी वाज ड्राइविंग लेट इन द नाइट. लेकिन उन्होंने फिर भी माइल्स एंड चिप्स को लगा कि they were the ones responsible for that, क्योंकि they were with Alaska the night she drove off and they were all intoxicated. So they thought themselves the main responsible persons for her death, and they mourned at her funeral as well. But Miles wanted to seek something in this. As he went by the line seeking the great perhaps, though, he thought that this was not the end of the story. When they were going through Alaska stuff, तो उनको एक line मिली, straight and fast, which was the answer to her labyrinth of suffering, which she goes by. And in a sense, that was the way how she died.
because she was driving, she was speeding, and she crashed, and that was her way out of this life, out of that suffering, out of that labyrinth which she was encased in. आगे जाके स्टोरी फिर इस तरह से हो जाती है कि माइल्स एक्चुअली सेट्स आउट टू दैट जर्नी, जिस तरह पिछली बुक में था, द सेम विश ही वांटेड टू फाइंड रीजंस व्हाई अलास्का डिड व्हाट शी डिड, एंड एंड ही इवन थॉट मे बी शी सुसाइड, उसने अटेम्प्ट की थी, बट इट वाज नॉट द केस बिकॉज शी नेवर शोड एनी सॉर्ट ऑफ साइंस कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती है. So he went with that journey and he was confident in that he would find the answers in that. And आगे जाके spoilers देने का वो बनता नहीं है because then it will just be a drop down कि फिर आपका दिल नहीं करेगा. Although this book was one of the books के जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगी, एंड आई वांटेड टू गेट टू द एंड ऑफ इट. हर एक चैप्टर के एंड में एक नई स्टोरी मुझे पता चली, एक नई यू कैन से अ न्यू, एक नया प्लॉट जाहिर हो रहा था, एंड द प्लॉट इंट्रिग मी मोर एंड आई वांटेड टू फाइंड द आंसर्स मोर. So I went to the end of it, and it was that much of a compelling book for me. So with that हम इस book review को हम यहाँ पे end करेंगे. और and if there are any more questions according to this book review, you can feel free to ask in the comments, and also suggest more books that you want us to write a review about them and record them for you guys. And that's about it. And then we look forward to you watching our next video about the new book review that will be 40 Rules of Love by Alif Shafak. And thank you, and Allah Hafiz.